Good afternoon to everyone present here. On behalf of the organizing committee of ICAVRI 2025, I, Tamanna Sharma, extend a very warm and heartily welcome to our esteemed invited speakers, scientists, researchers, young scholars, industrial delegates, and all participants who have joined us from different corners of India and abroad. Thank you so much for your morning sessions and our respective guest of honors. With this, we now commence the invited talk session of day one. Let's begin. Our first invited speaker of the session is Dr. Ravi Kumar Didodia, Assistant Professor at UCA, Tersadia University, Gujarat, who will be delivering a talk on the genome editing for agriculture Green agriculture, the role of CRISPR-Cas9 in pest management. Dr. Dodia is known for his expertise in plant biotechnology and his extensive work in genome editing approaches aimed at sustainable and eco-friendly agriculture. His research continues contribute to innovative solutions for crop protection and productivity enhancement. We are delighted and honored to have you, sir, here. Uh, Dr. Dodia, we warmly welcome you and invite you to kindly take the podium. Thank you to introducing me. Yes, And now sir. I'm Sir, I can sharing my hear you. screen. Okay, my screen is visible. Hello. Yes, sir. Sir, it's clearly visible. Okay. So start with the topic genome editing for the green agriculture, the role of CRISPR-Cas9 in pest management. As we all know, the world population is rising day by day. As per the World Bank 2015 data, the world population increased from 1963 billion to 9 billion in 2050. By 2050, we will need to increase the food production by 70%. But there are so many biotic and abiotic factors that are caused the loss to the agriculture. Among the biotic factors, insect alone caused 23% damage. To combat such catastrophic losses, new insect pest control methods must be developed. Among them, the plant resistance against the insect pest may be improved by plant breeding or target trait engineering. Then use of the pest-resistant variety, which is one of the most effective way to reduce the negative impact of insect pest on the crop production and yield. There are some recent advances in the novel breeding techniques offer the potential to develop the pest-resistant variety of the plant. The concept of genome editing in agriculture plant was established decade ago, and it revolutionized the plant research in every way. Now there are the comparison of different breeding methods used in modern agriculture. One of the crossbreeding is take 8 to 10 years to develop the new variety. Mutation breeding take also 8 to 10 years, while transgenic breeding also take 8 to 10 years to develop the novel variety or novel plant. But genome editing only takes the 46 years for the development of elite variety. Now come to the genome editing. What is the genome editing? First we know about the genome. Entire genetic material of organism or cell, it's called genome. Now come to the genetic engineering, the introduction or change of DNA, RNA or protein by the human manipulation to effect a change in organism genome. And come to the genome editing, a type of genetic engineering in which DNA is inserted, replaced or removed from the genome using artificially injured nuclease or molecular scissor in the genome of living organism. Here are the main four type of genome editing technique. First, meganuclease, zinc finger nuclease, TALEN, it means tail effector nuclease, and last one is CRISPR-Cas9. Now, comparison of different genome editing tool. Among these all the tool, the CRISPR-Cas9 has a high target recognition and its kind of action is double-stranded break in target DNA, while low chance of mutation and target range is in the rest of the tools. There is a unlimited target range, while in CRISPR-Cas9 there is a limited by palm. We later know about the what is the palm. It means that it CRISPR-Cas target the specific gene sequence, which is limited by palm, while in the rest of the tool there is a no range. It will cut the gene sequence from anywhere while it is low cost and hope improvement.
is high, then range is very broad, and there are more chances of future use. And this is the timeline of the CRISPR Cas9. CRISPR, the first in 1987, the first report of CRISPR cluster repeat was reported, and then after 2020 until 20, there is discovery of the VF CRISPR, and continues the development of the CRISPR technology is ongoing. There are two main scientists who received the Nobel Prize in 2020. First one is Emmanuel Charpenter and Jennifer Doudna for the development of method for genome editing using CRISPR-Cas9. Now come to what is the CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, which is the short form of the clustered regular interspaced short palindromic repeats. It is one of the gene editing techniques that enable the precise cutting of specific DNA section, resulting in the inactivation of the gene or replacement of one gene version with another. First discovery of this downstream of the alkaline phosphate isozyme gene in Escherichia coli. Initially, it was assumed that CRISPR acts on RNA, as in the case of RNA interference. But Marfin in South in 2008 demonstrated that CRISPR targets the DNA it could be programmed. Now, come to the what is the palindromic repeats? In CRISPR gene, there is a in the CRISPR gene there is a one spacer available between the repeats, which repeats are used for the targeting the specific gene and spacer where we can involve the foreign genome of the our interest. Now come to the Cas9 structure. Cas9 protein has a six domain. The first one is REC1, which is the largest and responsible for the binding to guide RNA. Then the role of REC2 domain is not yet well understood, and the arginine ridge helix is for the maintaining the cleavage activity, and PAM interdicting the domain responsible for the initiating binding to target DNA, and the HNS and RUVC are nuclease domain that cut the single-stranded DNA. Now there some some key roles of CRISPR. First is CRISPR RNA, then tracer RNA or transactive RNA that bind with CRISPR RNA and form active complex. These active complexes are known as a single guided RNA that direct the Cas9 to cleave the DNA at the specific position. And Cas9 first identified from the Streptococcus pyogenes bacteria, the nuclease Cas9 act as a molecular scissor to cut the DNA strand. And the palm, protospacer adjacent motif. Here, in this figure, we can see the palm in red mark. It is required for the Cas nuclease to cut, and it is generally found 3 to 4 nucleotide downstream from the cut site that target or give the specific marking area to Cas9 to cut the sequence from this specific area. Now come to the how CRISPR is work. Well, first, when the any bacteria that invade the organism that enter their nucleotide or sequence inside the body, and then in the CRISPR there is a specific spacer which are remaining from where this invader DNA are insert, and after that PCR CRISPR RNA cut that specific area from the spacer and multiplied it inside their organ inside their cytoplasm, and then after they combine with Cas9 and form CRISPR Cas9 complex. When again the second exposure or again attack of the same bacteria or same the organism on the specific microbes, it directly bind with CRISPR-Cas9, and CRISPR-Cas9 bind with the specific invader DNA and degrade that invader DNA, control that specific microorganism. Now there are some methods for the method for the how to insert the CRISPR-Cas9 gene in the organism. First one is Bayelish transformation, protoplast transformation, then agrobacterium tumefacium transformation, agrobacterium rhizogene transformation. These are the method for the inserting the gene inside the CRISPR gene inside the plant or any fungus or pathogen. But for the insect, there is a technique developed embryonic microinjection from which we insert that CRISPR gene inside the eggs of insect. Now there is a case studies. There are five case studies at present, but we are going to take only one. CRISPR Cas9 mediated knockout of the abdominal A homeotic gene in Folavium moths for frigipeda. This study was carried out at the United States of America,
by scientists, and there are methodology they follow. They rear the larva Spodoptera fujifera specific constant reared on the multiple species artificial diet, and then after they go for the identification and phylogenetic analysis of Spodoptera fujifera abdominal aging. For that, they take the mRNA from the medial tissue of the adult of polarium, then isolate the RNA with RNA minikit and the muscle alignment algorithm used for the identification, and then CRISPR-Cas9 mediated gene editing. For that, they identified exon 1 region of Spodoptera fujifera abdominal A gene. They identify exon 1 region of abdominal A gene. Then designed using single-guided RNA, designed a website hosted by the Broad Institute. This is the website. Then after they inject that specific single-guided RNA in the embryo through the embryo microinjection. Eggs were aligned in the single row on the slide with micropile up and single-guided RNA at 250 nanogram per microliter along with Cas9 protein 500 nanogram per microliter, and within the 4-hour oviposition after the injection of embryo were incubated in humidified chamber. The genomic DNA extraction and identification of the Spodoptera fujifera abdomen A mutation enhanced embryo and hind leg of moth. High resolution melt analysis and sequencing were used to genotype potential of Spodoptera fujifera abdomen A mutation in specific treated embryos and moth. And thereafter they go for the statistical analysis. And first off, they find out identification of specific abdominal aging. So they identify the region of the specific Spodoptera fujifera abdominal aging, which is responsible for the mutation, and in which they identify the exon 1 region. And for the confirmation of the specific gene, they go for the phylogenetic analysis and find out that this is the right genome they identified or isolated. And then after they go for the treatment in which they use the different type of embryo and find out that in Spodoptera falciparum A single guided RNA injected embryo show the less hatching percentage with 25%, and the development of from larva to pupa is 70% and pupa to adult is 95%, and there are more chances of mosaic. It means mutation are developed due to 19%. If mosaic percent they find out through number of larvae showing mutant phenotype divided by total number of larvae into 100. Here they find out that first photograph they show the 3-day old uninjected eggs that are uninjected eggs. They are hatched regularly, while they 3-day old egg that we injected this Spodoptera falciparum abdominal A gene, they are not hatching or hatched. They are become undeveloped. And while come to the larval point of view, second instar and fifth instar larvae saw the mutation with eighth or ninth abdominal segment or three or fourth abdominal segment are become bind or show the slight lumpiness appearance. While in fourth instar larvae, there is a show the leg which deformities, and the pupa also show the deformities in their specific abdominal region. And while come to the adult are also show just wait. Yes, here we can see the 3-day old eggs that were injected with abdominal aging single guided RNA with middle of egg being and only one hatch out of three. Just example, out of three, only one egg hatch, while rest of the two egg are not hatched. And if the egg hatch and the larva develop, that show the mutation yet here. Abdominal segment in the second star larvae and fifth star larvae. And also even there, the fourth star larvae, there is a pseudo legs are so deformed. While in the pupa, there is a deformities are seen, like here antennal segment are not bind with the pupa, while there is a deformities here in the pupal formation. While come to the adult, in the treated embryo, there is a show the deformed adult. In the both the cases, in the first adult male just show that their reproductive organs are completely deformed, while in the second one, the female show the wing are deformed. And when they are dissect the embryo region and see the female, which is this one female, this is a muted female. When they dissect their mutated female and show their ovary, they find out the mutation inside their ovary. With this is a black marking of appearance in the side their ovary.
These are the photos that show the mutation inside the ovary, and this is a show inside the mutation inside their last abdominal segment where their genital organs are present. Then after they go for the HRMN of the this specific gene treated embryo and adult moth, and then find out that the injected embryo with this photographs abdominal aging. It means inside that embryo they mutated this abdominal aging that show the deformities. If they are not showing the deformities, they are go in this green line. But they are all showing the deformities. That's why they go for the this curve. And finally, they extract the DNA from that mutated female or male and find out that all the mutated male and female show the mutation of the specific abdominal aging. It means they correctly mutated the abdominal aging through the CRISPR-Cas9 and developed a method for their management or by the mutation. The summary of this experiment showed that majority of the embryo injected sporophyllogic by abdominal A single-guided RNA did not hatch, resulted in complete loss of abdominal A function, and mutant male appeared sterile because no eggs were deposited by the wild-type female. Only one mutant female exhibited any evidence of ovulation, although few eggs that were deposited did not hatch. And there are so many other several case studies on that. We will share detail on the paper. And finally, I want to conclude this one. The use of CRISPR-Cas technology in the field of entomology has a considerable potential, including wide range of application in pest management and scientific investigation. Within the field of insect pest management, the use of CRISPR technology allows the precise genetic modification that may effectively bolster the resistance mechanism or regulate the population dynamics. The implementation of this innovation has a capacity to significantly transform the field of agriculture as it aims to reduce the dependency on chemical pesticide while advocating for the use of more environment-friendly pest management method. And there are some future threats need to identify the new target gene which play important role in insect growth and development and develop the susceptible strain of insect pest against the insecticide via CRISPR-Cas9 technology. Thank you. Hello. Hello. Tamanna, my talk is over. Hello. Yes, sir. My presentation is over. You can go for the further invited talk. Okay, your presentation is over. Okay. Thank you so much, sir, for your talk. It was like really very informative. And sir, thank you so much for your excellent and insightful presentation and your detailed explanation about the genome editing technologies and the role of CRISPR-Cas9 in the advancing green agriculture and effective pest management has truly enriched the today's session. So the clarity of your scientific like insights and the practical relevance of your work has provided a valuable knowledge to all the participants. And sir, there are some questions which are being shared to us, and I will drop them in the chat box. You can take a look. Sure. Yes, sir. So it's been shared. You can check it out. Okay. The first question is the CRISPR-Cas9, how they reduce the farmers to help to reduce the dependence on chemical pesticide. In that sense, I would like to explain that when they first we must need to develop such a amount of that specific pesticide for the controlling insect pest in a large amount. This is a CRISPR technology. It initiated in India is a purely trial-based and scientific basis. When we develop the specific CRISPR gene technology, CRISPR gene mediated or mutated the specific any gene, which can be directly spray in the which
when available with a sprayable formulation with multinational companies, because it need high amount of money, or there are so many problems during the scientific investigation are faced by scientists. So it take a lot of time to develop the pesticide which can used by the farmer to directly spray in the field. So there are no further questions. So thank you so much, sir, for your time. And our next distinguished speaker is Dr. Jujar Singh, Assistant Professor at Mata Gujri College, Fatehgarh Sahib, Punjab. Dr. Singh will be delivering an insightful talk on advances in molecular breeding for the fusarium wilt resistance in the chickpea. Dr. Singh is dedicated researcher whose work focuses on crop improvement, plant pathology, and the application of modern molecular tools to enhance the diseases in the pulses. His significant contributions towards delivering the chickpea varieties with improved resilience against the fusarium wilt has been widely recognized in the scientific community. His expertise in integrating genomics, marker assisted breeding, and the molecular diagnostics has greatly strengthened ongoing effort to ensure crop health and food security. We are honored to have him with us today, Dr. Jujar Singh. We warmly welcome you and kindly invite you to address the gathering. Dr. Singh, please take the stage. सॉरी मैम, एक तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो मेरी नहीं है, और लेक्चर का टॉपिक भी मेरा नहीं है। आई Okay, थिंक सो आई थिंक सो आपको थोड़ी सी मिस्टेक लगी है। okay, so I'm really sorry for that, sir. आई एम डॉक्टर जुजार सिंह, फ्लोरिकल्चरिस्ट मैम, Okay, sir. एंड माय टॉपिक इज ऑन ड्राई फ्लावर प्रोडक्शन। Okay. So you can continue with your topic. ओके ओके, थैंक यू सो Yes, sir. मच। And I really apologize for that, sir. इट्स ओके मैम, इट्स ओके। स्क्रीन विजिबल है मैम? Yes, sir. So it's clearly visible. ओके, थैंक यू सो मच मैम। So, good afternoon, all of you. Today, my topic is improving livelihood of rural women through dry flower production. सो ड्राई फ्लावर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेशली अगर हम बात करें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम फ्लोरिकल्चर की देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है, दैट इज़ ऑफ फ्लावर प्रोडक्ट्स, स्पेशली ऑन ड्राई फ्लावर प्रोडक्शन. Different type of products are sold during season. So dry flour, basically why we go for dry flour? Dry flour products are eco-friendly, biodegradable, and does not depend on weather condition. सो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जैसे कुछ सीजन आता है तो वो फ्लावर्स हम ग्रो करते हैं, जीनिया है गर्मियों में ग्रो करते हैं, पेंजी है तो वो सर्दियों में ग्रो करते हैं। तो ड्राई फ्लावर्स ऐसी चीज है कि जिसको हम थ्रू आउट द ईयर हम अवेलेबल करवा सकते हैं मार्केट में। These can be a substitute for plastic flowers which cause pollution and degrade our environment. Basically ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम प्लास्टिक को दूर कैसे करें। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे घरों में अगर डेकोरेशन के लिए हम फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वो ड्राई फ्लावर्स की बजाय प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं। और ये प्लास्टिक के फ्लावर्स जब गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। और फिर ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि ये जाके वाटर सोर्सेज को चोक करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हमारे लिए जो है वो यही है कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करें। तो अगर हम ये डायफ्राम्स यूज़ करते हैं तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि ये एक अच्छा सोर्स है हमारे लिए रिप्लेस करने का प्लास्टिक फ्लावर्स को। ड्राई फ्लावर्स आर लॉन्ग लास्टिंग एंड वाइडली अवेलेबल ऑल ओवर द ईयर विदाउट मच केयर।
हाँ, एक चीज़ की यहाँ क्लियर करूँगा कि मेरे को डीएसटी का एक प्रोजेक्ट मिला। तो हमने उसमें काफ़ी तरह के ड्राई फ्लावर्स प्रोड्यूस करी है। तो मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया पंजाब कंडीशन में, क्योंकि हमारे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि पंजाब में काफ़ी डस्टिंग रहती है, स्पेशली उस टाइम जब क्रॉप हार्वेस्ट होती है ना, चाहे वो वीट हार्वेस्ट हो रहा है, वो चाहे पैडी हार्वेस्ट कर रही है, तो उस टाइम काफ़ी डस्टिंग रहती है। तो अगर हमने ड्राई फ्लावर्स की बात करें तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3.5 साल से पुराने ड्राई फ्लावर्स हैं जो आज भी बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या इसकी लाइफ के बारे में जब बात करते हैं तो इसकी लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग है। Raw materials used in dry flower production are easily available and round the year, supplied from flower garden or forest area. तो बेसिकली हम बात करें तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो मार्केट में अवेलेबल है या हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि हमने ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो एग्रीकल्चर वेस्ट से और जो फ्लावर्स अवेलेबल हैं उनसे बनाए हैं। तो इसमें काफ़ी जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं, मीन्स वीड्स हैं, तो उसको भी हमने यूटिलाइज किया है। तो बेसिकली यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो हमने फ्लावर्स यूज़ किए हैं, जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए क्या थी कि ये सारे फ्लावर्स वो फ्लावर थे जो हमारे इजीली अवेलेबल थे, फॉरेस्ट में थे, या फिर अगर हम बात करें तो हमारे फील्ड में थे अवेलेबल। तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था और इससे हमने काफी अच्छी इनकम जनरेट करने की कोशिश की है। तो आगे जब आगे आगे मैं प्रेजेंटेशन करूंगा तो उसमें काफी ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जो आप देखेंगे कि हमने सिर्फ एग्रीकल्चर वेस्ट को यूटिलाइज किया है। सो रॉ मटेरियल ईयर अराउंड हमें मिलता रहा। ड्राई फ्लावर प्रोडक्शन नीड्स लो इन्वेस्टमेंट एंड लो कॉस्ट मशीनरी। जब मैंने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था तो मेरे दिमाग में यह था कि फोकसिंग एरिया हमारा ज्यादातर क्या रहता है कि बड़े फार्मर्स या मिडिल फार्मर्स या स्मॉल स्केल फार्मर्स। तो हमने उन लोगों को चूज किया जिनके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी नहीं है। तो वो कैसे एग्रीकल्चर में और स्पेशली ड्राई फ्लावर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहा। तो हमने क्या किया कि उसमें काफ़ी एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कॉर्न हस्क है और इसके बिना जो कॉटन हस्क है, इनको यूटिलाइज करके हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए, तो जो कि विदाउट एनी कॉस्ट है। आप देखोगे कि उसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसमें। Dry flowers are used for the decoration, bouquet, different floral arrangement, and various floral handicrafts such as greeting cards, wall hangings, calendars, candles, jewelries, and different mirrors. डेकोरेटिव जो मिरर्स हैं ये काफ़ी अच्छे बनते हैं इसके, और इवन जो फ्लोरल रीथ हैं वो काफ़ी डिमांड में रहती हैं। अगर हम बात करें इसके ग्रीटिंग कार्ड्स की, या फिर इवन हमने इसमें कोशिश की है कि ड्राई फ्लावर से ड्राई फ्लावर राखी तैयार करने की। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम ड्राई फ्लावर्स की राखी मार्केट में लॉन्च करें, और स्पेशली कॉलेज में जहां हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब मोटिवेशनल बात क्या थी कि जस्ट 3 डेज में बच्चों ने 3500 रुपीज़ की राखी बना के सेल कर दी थी। तो उसकी काफ़ी डिमांड थी। तो उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम कि वो कैसे बनाई, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले अगर हम स्टेटस की बात करें तो ड्राई फ्लावर इंडिया में और फॉरेन में क्या बात करें, तो यूएसए इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ड्राई फ्लावर्स। फ्रॉम इंडिया ड्राई फ्लावर्स आर एक्सपोर्टेड टू ओवर 60 कंट्रीज। Dry flower alone contributes 70 to 75% of total floriculture export. Dry flower alone contribute nearly 320 crores of total export. The major production countries in India are in center, स्पेशली बात करें तो टोटिकोन है, उसके बिना कोची है, देन कोलकाता है। तो बेसिकली अगर हम इन रीजन्स को देखते हैं, ये स्पेशली वो रीजन्स है जहाँ समुंदर तट लगता है। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इन एरियाज को डेवलप किया फ्लोरिकल्चर के लिए, ड्राई फ्लावर्स के लिए स्पेशली। यूएसए, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी एंड यूएई आर मेजर कंट्रीज वेयर द इंडियन ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। हाँ, इसमें एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इन कंट्रीज़ में अगर सबसे ज़्यादा हमारा कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो वो जा रहा है पॉट प्यूरीज। सो पॉट प्यूरीज क्यों, और हमने इसके ऊपर क्यों काम किया, और फिर अगरबत्तियों के बारे में बात करेंगे, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूंगा जिसमें दिक्कत रहती है।
Dry flowers like larkspurs, paper flowers, static, sunflowers, gomphrena, lotus pods. Lotus pods ऐसे एक सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है. मैरीगोल्ड पेटल्स, रोज पेटल्स, जेरेनियम. रोज पेटल्स की बात करूं तो इसकी काफ़ी डिमांड रहती है. इवन आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन रेजिन का काफ़ी काम चलता है. तो रेजिन प्रोडक्ट्स ज़्यादातर लोग लाइक कर रहे हैं, तो उसमें ये पेटल्स काफ़ी यूज़ होती हैं. तो इसकी डिमांड ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द ईयर रहती है. अगर हम आगे बात करें तो स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी, इस इंडस्ट्री में स्कोप और अपॉर्चुनिटीज क्या है. इट इज लेबर इंटेंसिव प्रोसेस. सो अगर लेबर इंटेंसिव है तो दैट मीन्स क्लियर है कि काफ़ी लेबर लगेगी, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक बिजनेस है ये. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ import export, as the maximum flowers used are imported from different countries, स्पेशली फ्रॉम चाइना. ये कोट करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जब ड्यूरिंग प्रोजेक्ट हम लुधियाना में गए तो फ्लावर्स देखे, तो उसमें एक हमने देखा कि पैकेट्स फ्लावर के पैक होके आ रहे हैं, और उसकी कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट ₹200 है, और उसमें सिर्फ 10 फ्लावर्स हैं. तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि वो 10 फ्लावर्स ₹200 के सेल हो रहे हैं. मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि वो 10 फ्लावर्स जो 200 में सेल हो रहे हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं, और जो कि हमारे पास लोकली बड़े इजीली ग्रो हो सकते थे, जिनको हम ड्राई कर सकते थे. तो ये मोटिवेशनल चीज़ भी थी कि इस लाइन में ज़्यादा कंपटीशन कम से कम पंजाब में नहीं है. तो हमने यहाँ पे फिर ड्राई फ्लावर्स प्रोड्यूस करने शुरू किए, उसकी पैकिंग करनी शुरू की, फिर मार्केट्स में भेजा. तो काफ़ी डिमांड रही, और ऑल ओवर द इंडिया हमने ये सारे पैकेट्स भेजे हैं, और हमारे पास सिंगल पैकेट भी नहीं बचा. अगर हम बात करें तो काफ़ी डिमांड है इन चीज़ों की. इट विल एम्पावर द यूथ ऑफ द कंट्री विद एडिक्वेट स्किल्स. देखो, अगर हम बात करते हैं तो आजकल स्किल के काफ़ी इम्पोर्टेंस है. और दूसरी बात, अगर बात करें कि जॉब्स ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो काफ़ी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हम इंडिया में देख रहे हैं. तो उसके लिए अगर हम छोटे छोटे ऐसे बिजनेस शुरू करते हैं तो इसकी काफ़ी डिमांड रहेगी. और स्पेशली अगर हम वुमेन की बात करें तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एरियाज ऐसे हैं, हम क्या देखते हैं कि वहाँ वुमेन को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता, और ज़्यादा वो बाहर जाके काम भी नहीं कर पाती. तो एक ये ऐसा बिजनेस है जिसको हम घर में शुरू कर सकते हैं. मटेरियल जो है वो लोगों के घर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसको हम सेल कर सकते हैं. तो एक ऐसी ही कंपनी साउथ में थी जिसने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया. तो बेसिकली वो कंपनी क्या करती है कि स्पेशली वाटर हाइसिंथ जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो उस वाटर हाइसिंथ को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, तो उसकी जो स्टेक्स हैं उसको फिर लेडीज़ को बांट देते हैं. तो वो लेडीज़ क्या करती हैं, उसकी छोटी छोटी बास्केट्स बनाती हैं, और फिर उस बास्केट्स को वो एक्सपोर्ट करते हैं. और जिससे मैं मतलब यूके में ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट हो रहा है. तो वो क्या देखते हैं कि एक तो ये बास्केट्स जब फॉरेन गई तो हमें फॉरेन से पैसे आए, मतलब फॉरेन रिटर्न हुआ ना. और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा सोर्स हुआ जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली थी, जिनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था. तो उनके लिए इनकम का ये बहुत अच्छा सोर्स था. और स्पेशली वो लोग जिनके पास मतलब ज़्यादा सोर्सेज नहीं है इनकम के. तो इस चीज़ को मोटिवेट होते हुए फिर हमने इससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जो हमने पंजाब में लागू किए, और वहाँ से हमने ये बनाने शुरू किए. डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड प्लांट मटेरियल्स अवेलेबल वाइडली इन वर्ल्ड आल्सो स्ट्रेंथन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राई फ्लावर इंडस्ट्री. तो अगर हम स्पेशली बात करें तो कुछ ऐसे वाइल्ड प्लांट्स भी इवन हमने यूज़ किए हैं जिसके बारे में हम खुद नहीं सोच सकते थे कि ये भी यूज़ हो सकते हैं. तो उसमें स्पेशली अगर बात करें तो फाइलस माइनर, जिसको हम ज़्यादातर जानते हैं गुल्ली डंडा के नाम से, जो वीट में मिलता है, तो उसको हमने ड्राई करके यूज़ किया और काफ़ी अच्छे उसके प्रोडक्ट्स बने. तो नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में उसको मैं शेयर करूंगा. फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. सो बेसिकली क्या है कि शुरू में हमें थोड़ी थोड़ी स्किल जो है डेवलपमेंट करनी पड़ी. गांव में जाके हमने लेडीज़ को सिखाया, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बने उनको फिर हमने इसको सेल करना शुरू किया.
Awareness about the potential of dry flower technology by workshops, exhibitions, and seminars, etc., are important aspect to raise and strengthen dry flower industry in India. तो बेसिकली हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहले पहले तो लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता ही नहीं था। तो हमने क्या किया, इसके अवेयरनेस कैंप्स लगाने शुरू किए। इवन हमारे एक शोक सभा होती है दिसंबर में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बाल दिवस बनाने के लिए बोला है। तो मेरी जॉब जो है फतेहगढ़ साहिब में है, जो साहबजादे शहीद हुए हैं, बिल्कुल वो मतलब मेरे कॉलेज के सामने वो गुरुद्वारा है जहाँ हुए हैं। तो हमने वहाँ शोक सभा में इन फ्लावर्स को सेल करना शुरू किया। तो मतलब फर्स्ट टाइम हमारे लिए तो ये था कि एक भी प्रोडक्ट हमारा नहीं बचा, टोटल प्रोडक्ट्स हमारे सेल हुए। और वहां से हमें मोटिवेशन और मिला, फिर हमने और ग्रुप्स को ज्वाइन किया, तो उनके साथ फिर हमने ये सारा इंक्रीज किया आगे। तो अब ये फ्लावर प्रोडक्शन जो हमने करनी है, तो उनके लिए सबसे पहले प्लांट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल कैसी हो, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड फाइब्रस टिश्यूज। अब हमने फ्लावर्स वो सिलेक्ट करने हैं जिनमें पहले ही वाटर कंटेंट लेस हो। अगर ज्यादा होगा तो ड्राइंग में दिक्कत आएगी और फंगस की प्रॉब्लम होगी। अट्रैक्टिव शेप एंड पैटर्न्स, अब फ्लावर वो चेक करने हैं हमने जिनके शेप भी अट्रैक्टिव हो, पैटर्न्स अट्रैक्टिव हो। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ, तो ड्राई फ्लावर्स में एक्रोक्लिनम है, तो ये काफी मतलब अट्रैक्टिव रहता है, कलर काफी अच्छे हैं और रिटेन रहते हैं। देन हेलिक्राइसम है, इसको हम यूज करते हैं ड्राइंग में। देन टाइम ऑफ हार्वेस्ट, स्टेज ऑफ हार्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोपहर को इसको हार्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली वाटर कंटेंट काफ़ी कम होते हैं इसमें। बट उसमें क्या है कि फ्लावर श्रिंकल हुआ होता है, तो उसमें प्रॉपर शेप ड्राइंग के टाइम नहीं आ पाती। तो स्टेज ऑफ हार्वेस्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, कौन सा फूल हमने खुला हार्वेस्ट करना है, कौन सा बंद हार्वेस्ट करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं रोज़ की बात करता हूँ, तो थोड़े पेटल्स खुले और ज़्यादा बंद जो हैं वो प्रेफर रहते हैं। और अगर मैं हेलिक्राइसम की बात करूँ, तो ये मतलब पार्शली खुला हुआ ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ड्राइंग ड्यूरिंग ड्राइंग भी ये थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग प्लांट मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन वाटर टू अवॉइड विल्टिंग। सो हार्वेस्टिंग के बाद हम इसको पानी में डाल देते हैं, सो दैट ये विल्ट ना करे, क्योंकि फिर स्टेम जो है उसकी दिक्कत आएगी, वो बेंट हो जाएगी। सिलेक्टेड मटेरियल मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी इंसेक्ट और पेस्ट डैमेज। सो कोशिश करें कि फ्लावर्स वो सिलेक्ट करें जहां इंसेक्ट और पेस्ट डैमेज ना हो। सो डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर रहे हैं इसमें ड्राइंग के। एयर ड्राइंग है, एम्बेडिंग ड्राइंग है, सन ड्राइंग है, हॉट एयर ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, देन प्रेस ड्राइंग है, देन फ्रीज ड्राइंग है। तो फर्स्ट एयर ड्राइंग की बात करें, तो हम क्या करते हैं, जस्ट हैंग कर देते हैं फ्लावर्स को अपवर्ड टू डाउनवर्ड पोजीशन में। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे फ्लावर ड्राई होता रहता है और स्टेम भी सीधी रहती है। एम्बेडिंग ड्राइंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह के जो ड्राइंग मीडियाज हैं, जैसे सिलिका जेल है, बोरेक्स है, देन सैंड है, उसको यूज करते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं फॉर ड्राइंग। सन ड्राइंग में क्या है कि हम सन ड्रायर यूज करते हैं उसको ड्राइंग करने के लिए। हॉट एयर ओवंस में काफ़ी अच्छे ड्राइंग होते हैं। देन माइक्रोवेव ओवन क्विक मेथड है ड्राइंग का, बट क्वालिटी थोड़ी सी इंफीरियर रहती है इसमें। सो प्रेस ड्राइंग है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम प्रेस ड्राइंग से बनाते हैं, जैसे पेंजी है उसको ड्राई करते हैं तो प्रेस ड्राइंग से करते हैं। और स्पेशली ये फ्लास्क के हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, या फिर रेजिन प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें यूज होते हैं। तो हॉट एयर ओवन अच्छे क्वालिटी के फ्लावर्स हमें इसमें मिलते हैं अगर ड्राइंग करते हैं। तो सन ड्रायर में बेसिकली हम क्या करते हैं, वो फ्लावर्स को ड्राई करते हैं जो अपना कलर रिटेन रखते हैं, या फिर वो फ्लावर्स जिनमें से हमने कलर को टोटली रिमूव करना है। जैसे मैं कुछ ग्रासेस की बात कर रहा हूँ, लेग्रस है, देन अगर बात करें लैग्रस है, ब्रीजा है, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, उसको धूप में रख के उसमें उसके कलर उड़ा देते हैं। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको टिंटिंग करते हैं, या फिर उसमें हम कलर जो है वो डाई करते हैं। देन मैं एयर ड्राइंग की बात कर रहा था, तो ऐसे हम हैंग करते हैं, तो उसके बाद फिर फ्लावर्स जो हैं वो ड्राई होते हैं। तो स्पेशल प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स हैं, ग्लिसरीन है, स्केल्टनिंग है, देन ब्लीचिंग है, रेजिंग एम्बेडिंग है। तो ये कुछ काम हमने इस पे भी किया है, तो वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। देन नेचुरल डाइज है, सिंथेटिक डाइज है। अब ये डाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फ्लावर्स को डाई करना है, कलर रिटेन नहीं रह रहा, उसमें कलर प्रॉपर नहीं है, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी।
तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डाइंग करते हैं। तो नेचुरल डाइज भी यूज करते हैं, सिंथेटिक डाइज भी यूज करते हैं। सो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिप डाइंग भी है, कुछ को हम पूरे को गर्म पानी में डिप करके तो ड्राई करते हैं, कुछ स्प्रे कलर्स आते हैं तो स्प्रे करते हैं, एब्जॉर्प्शन ड्राइंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, ग्लॉस एप्लीकेशंस यूज करते हैं। देन ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स जो जो हमने इसमें बनाए हैं इस प्रोजेक्ट में, बेसिकली वॉल हैंगिंग्स हैं, पॉट प्यूरीज हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट्स हैं, रेजिन प्रोडक्ट्स हैं, देन फ्रिज मैग्नेट्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, बुक मार्क्स हैं, कैंडल, बेसिकली कैंडल्स जो डेकोरेशन है उसकी काफ़ी डिमांड रहती है। देन ड्रिफ्ट वुड्स हैं, फ्लोरल ड्राइज हैं, देन फ्लोरल टीज हैं, और फ्लोरल इंस्टेंट स्टिक्स हैं। तो यहाँ एक स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, जो हमने फ्लोरल टीज की बात की, तो यहाँ हमने कुछ फ्लावर्स की जो टी हैं वो पेटेंट करवाई है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन हमने यूज किया था जिसमें काफी अच्छा न्यूट्रिशन भी था और फ्लेवर काफी अच्छा था। और अगर अट्रैक्टिव कलर्स की बात करें तो वो टी का कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो स्पेशली जिस कलर की मैंने टर्बन पहनी हुई है, यही कलर उस टी का आता था। तो काफी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट था इसका। नेक्स्ट है फ्लोरा इंस्टेंट स्टिक्स, तो इस पे भी कुछ काम किया है, इसकी डिस्कशन भी हम आगे करेंगे क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें जो दो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसमें है पैकिंग, स्टोरेज, केयर फॉर ड्राइंग फ्लावर्स। क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो तैयार कर लिए, अब उनकी केयर भी करनी है, नहीं तो क्या होगा कि उसमें फंगस काफी आ जाती है, मोल्ड्स आ जाते हैं, तो वो दिक्कत रहती है इसमें। To increase the shelf life of products, dry flower needs some special care during handling and storage because they are fragile. बेसिकली इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, इसमें मोल्ड्स आ जाते हैं तो वो काफ़ी डैमेज करता है अगर मॉइस्चर रहेगा। बिफोर फाइनल पैकेजिंग द मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट्स आर इंश्योर्ड। सो हम कोशिश करते हैं कि इसमें मिनिमम जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रहे। टू रिटेन देयर कलर एंड शेप फॉर लॉन्गर टाइम, प्रॉपर पैकेजिंग एंड स्टोरेज इज नीडेड। तो प्रॉपर सील करके फिर हम उसको भेजते हैं सो दैट उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन ना हो सके। इवन सिलिका के छोटे छोटे पैकेट्स उसमें डालते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो अवॉइड शैटरिंग ऑफ पेटल्स बाय एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, द flowers must be vacuum packed to save them for long time। सो वैक्यूम पैकिंग भी करते हैं जो बड़े फ्लावर्स हैं, सो दैट उनकी पेटल्स जो हैं वो खराब ना हो सकें। टू मिनिमाइज वेयर एंड टियर, द पैकेजिंग मटेरियल गिविंग प्रोटेक्टिव सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। सो ये पैकिंग जो मटेरियल है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी काफ़ी हेल्पफुल है। इवन जो बबल्स वाली पैकिंग है वो कई जगह हम करते हैं सो दैट फ्लावर जो है वो डैमेज ना हो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। Dry flowers and products are always stored under the moisture proof container। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से क्या है, जो इसके नेचुरल कलर्स हैं वो फेड होने लग जाते हैं। टू अवॉइड एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट, सिलिका जेल पाउचेज आर केप्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर बिफोर फाइनल पैकिंग। तो हम अब बात करेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम इससे बना सकते हैं, और स्पेशली कौन कौन सा मटेरियल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट फोटोग्राफ आप देख रहे हो, तो ये जो फोटोग्राफ है इसको हमने स्पेशली बनाया कॉर्न हस्क से। तो कॉर्न हस्क को यूज किया गया है कि इस फ्लावर्स को बनाने के लिए। और नेक्स्ट जो देख रहे हो पाइनस कोन है जिनसे ये रोजेस बनाए गए हैं। और थर्ड पिक्चर में जो आप देख रहे हो दैट इज फाइकस रिलीजियोसा के लीव्स हैं, दैट इज पीपल। तो पीपल के पत्तों को पहले हमने स्केल्टनिंग किया है, उसके बाद डाइंग किया, उसके बाद फिर ये फ्लावर्स बने हैं। तो नेक्स्ट में जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो देन ये फिर कौन से फ्लावर्स, जो कॉर्न हस्क है उससे हमने ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं। तो जो थर्ड लास्ट फोटोग्राफ है ऊपर, तो उसमें आप जो फ्लावर देख रहे हो वो कौन से बने हुए हैं। इवन उसमें हमने काफ़ी एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे हम बात करें तो कॉर्न के ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस आती है उसको यूटिलाइज किया हुआ है। उसके बाद आप एक डॉल देख रहे हो, तो ये डॉल भी कॉर्न हस्क से बनी हुई है, ये विदाउट डाइंग है। डाइंग के बाद ये बहुत खूबसूरत डॉल्स लगती हैं। तो उसके बाद अगर आप फोटोग्राफ देखो तो उस फोटोग्राफ में जो अरेंजमेंट है, तो इसमें ज्यादातर हमने बाजरा यूज किया है। और इसके जो इवन जो पॉड है, जो आप पॉट देख रहे हो, वास देख रहे हो, तो वो वास भी कॉर्न हस्क हस्क से बना हुआ है। और नीचे जो फर्स्ट फोटोग्राफ है ये बाजरा है, बाजरे को ड्राई किया गया है। और उसके बाद जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो जो उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं दैट इज एक्रोक्लिनम।
और उसके बाद आप जो फोटोग्राफ देख रहे हो उसमें डिफरेंट ग्रासेस हैं। तो इसमें लैग्रस और ब्रीजा की फोटोग्राफ है। उसके बाद जो आप छोटी छोटी बास्केट्स देख रहे हो तो उसमें एक्रोक्रिलम और हेलिक्राइसम है। और उसके बाद जो लास्ट फोटोग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट फ्लावर, स्टेटिस। तो ये बहुत अच्छे कलर रिटेन रखता है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो 1 साल तक तो ये बहुत अच्छे कलर रिटेन रहेंगे इसमें। तो स्टेटिस को ड्राई करना और उसके बाद यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी इसकी डिमांड भी रहती है। अब पॉट प्यूरीज की बात करें तो पॉट प्यूरीज हमारे लिए एक बहुत अच्छा वेंचर था, क्योंकि हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स हमने कुछ परचेज किए। तो हम हमारे पास इधर पंजाब में कुछ एरिया है जहाँ कॉटन काफ़ी लगती है, तो उसके कॉटन हस्क को हमने यूज़ किया। उसको ड्राई करने के बाद उसको डाइंग की, कलर किया, और उसके बाद फिर उसमें कुछ अदर्स जैसे हम कैजोरिना के पॉड्स हैं, कैजोरिना के फ्रूट्स हैं, उसको यूज़ करते हैं। इवन गॉम्फ्रीना है, उसको यूज किया। तो इनको फिर मिक्स करके इसमें एसेंशियल ऑयल डाल के तो ये पॉट प्यूरीज हम सेल कर रहे थे। तो ये ऑलमोस्ट एक जो पैकेट है हमारा 100 रुपीज का, बड़े इजीली सेल हुआ। और कोई भी पैकेट हमारे पास नहीं बचता था, जितने हम तैयार कर लेते वो सारे के सारे बिक जाते थे। तो देन ग्रीटिंग कार्ड्स है, तो ग्रीटिंग कार्ड्स को हम बना सकते हैं फ्लावर्स से। सो डिफरेंट तरह के ये फ्लावर्स हमने यूज किए हैं। बुक मार्क यूज हो सकते हैं। इवन जो पाम है, तो पाम के जो लीव्स हैं ड्राई हो जाते हैं, उसको यूज कर सकते हैं इसमें। अब वॉल हैंगिंग्स, ये वॉल हैंगिंग की हमारी काफी डिमांड रही है। तो इसमें जो फर्स्ट फोटोग्राफ आप देख रहे हो, तो इसमें जो फर्स्ट फोटोग्राफ में आप पेंटिंग देख रहे हो जो डिफरेंट ब्रांचेस की है, तो ये बरगद की रूट से बनी हुई है। नेक्स्ट जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, तो इसका हमने डिजाइन पेटेंट लिया है अभी। तो ये भी जो फोटोग्राफ है, ये साइकिल जो आप देख रहे हो, ये भी बरगद की रूट से बना हुआ है। और उसके बाद फिर आप फोटोग्राफ देख रहे हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि चाहे आप किसी भी धर्म से हो, तो आपकी धर्म की कुछ कोटिंग्स हैं, कुछ लाइंस हैं, वो आप लिखवा के उसको फ्लावर से डेकोरेट करके अगर अपने रूम में रखवाना चाहते हो, तो वो भी हम बना रहे थे इसमें। और उसके बाद आप देख रहे हो एक छोटा सा फ्लावर अरेंजमेंट है जो ड्राई फ्लावर से बना हुआ है। उसके बाद आप बुद्धा जी की एक फोटोग्राफ देख रहे हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। तो आप देख रहे हो कि इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है कि पीपल के पत्ते की स्केल्टनिंग की है। तो उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, तो ये हमने बनाई। तो इसकी काफ़ी डिमांड थी। इवन उत्तराखंड के जो ऑनरेबल गवर्नर हैं, उनको हमने फिर ये कुछ फोटोग्राफ्स गिफ्ट भी की। तो जब उन्होंने हमारे से ये ली, तो उन्होंने सबसे पहले माथा टेका। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बोलो कि टाइम था कि हमने देखा कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जो बैठे हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को उत्साहित कर रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हो, इसमें एक स्पेशल जो फ्लावर है उसके फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो आप जो बटरफ्लाई देख रहे हो उसमें इवन रोज पेटल्स हैं, और जो फ्रूट लगा हुआ है वो पारिजात, यानी कि अगर हम बात करते हैं पारिजात की, तो ये वो फ्लावर है जो कहा जाता है कि कृष्ण जी इंद्रलोक से इस धरती पे लेके आए थे। और ये भी कहा जाता है कि ये फ्लावर जो सागर मंथन हुआ है उसमें से ये पौधा निकला है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो फीवर्स हैं उनका सोल्यूशन भी इसके पत्ते से होता है। तो ये काफ़ी हमने अपने कॉलेज में लगाए, तो इसके फ्रूट्स कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहे थे। तो उसको फिर हमने इन पेंटिंग्स में यूज़ किया, और ये पेंटिंग काफ़ी डिमांड में रही। उसके बाद कुछ रेजिन प्रोडक्ट्स थे जिनकी काफ़ी डिमांड रही। जो फर्स्ट आप देख रहे हो, तो ये कोस्टर्स हैं। तो इसमें डेजी फ्लावर्स को हमने यूज़ किया। और नेक्स्ट में अगर आप देखोगे कि तो बुक मार्क्स हैं, तो बुक मार्क्स में कैलेंडुला जो है स्मॉल, उसको यूज़ किया हुआ है, पेंजी को यूज़ किया हुआ है। और देन फिर अगर आप नेक्स्ट कोस्टर देख रहे हो, तो उसमें कैलेंडुला और जो फर्न्स हैं उसको यूज़ किया है। तो की रिंग्स, ईयर रिंग्स, ये सारे हमने ये प्रोडक्ट्स इसमें से बनाए, और काफ़ी डिमांड रही इसकी। तो अगर हम बात करें, जो मेरा लास्ट टॉपिक था दैट इज अगरबत्तियां, है ना। तो इंस्टेंट सिक्स, तो मैंने पहले बताया कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। कारण क्या है कि मैंने काफ़ी जगह ट्रेनिंग ली, इवन काफ़ी लोगों से भी मिला, काफ़ी इंडस्ट्री से मिला जो इस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली दो दिक्कतें रहती हैं। जो आप अगरबत्ती बनाते हो तो उसकी बर्निंग में काफ़ी इशू रहता है, वो इजीली बर्न नहीं होती। तो उसकी बर्निंग के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट और चारकोल डालते हैं। और मैंने काफ़ी कंपनियों से जब लिटरेचर सर्वे किया उनका, तो पता चला कि इवन चप्पल जो है
उसकी रबड़ को भी यूटिलाइज किया जा रहा है अगरबत्ती में। इसी वजह से जब अगरबत्ती हम थोड़ी देर भी जला के बैठते हैं तो इरिटेशन फील होती है हमें। तो हमने कोशिश की कि हम इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करें। तो हमने क्या किया कि जो गुरुद्वारे और मंदिर से हमने ड्राई फ्लावर्स कलेक्ट किए, उनका पाउडर बनाया। उसके बाद फिर हमने इसकी बाइंडिंग एजेंट जो हमने यूज़ किया। उसके बाद इसमें हमने इसकी बर्निंग के लिए जो पाउडर बनाया था उसमें फिर डिफरेंट तरह की ट्रीज की बार्क्स को यूज़ किया। तो ये ट्री बार्क्स हमारे लिए बर्निंग में हेल्पफुल कर रही थी, बट यहाँ हमें 100% सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि जो अगरबत्ती थी वो 80% तो बर्न हो रही थी, 20% फिर रह जाती थी। तो इस पे भी हमारा अभी काम कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी फुल फ्लैश हमारा इस पे काम ओवर नहीं है कि हम टोटल हर्बल जो अगरबत्ती है वो डेवलप कर सकें। सो थैंक यू सो मच। आ, ये मेरा जो अभी तक का काम था, और स्पेशली जो हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे थे, तो ये सारा वो काम था। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करूं। Thank you so much, sir. Your lecture was great. And for your insight and presentation on improving livelihoods of rural women through the dry flower production. It was really amazing. And even I got a plan like how I can use the flowers. Your work beautifully highlights how value addition, skill development, and innovative agriculture based enterprises can improve women and create a sustainable income opportunities. We truly appreciate your meaningful contribution. And sir, there are some like questions which been shared with us. I will share it in the chat box. You can take a look. ओके मैम। आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर वुमेन हु वांट्स टू। हाँ, डेफिनेटली कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड कर रही हैं। इवन हमने भी काफ़ी ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम ट्रेनिंग देते हैं। सर, इन योर व्यू हाउ, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट इज द बेसिक प्रॉफिट मार्जिन स्मॉल स्केल फ्लावर? अब मार्जिन काफ़ी है, मार्जिन मार्जिन की दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्लियर करूं कि जो हम फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इवन मैंने बात की थी कुछ ग्रासेस की, लेग्रस ग्रास की। तो वो आप मान के चलो कि थोड़े से एरिया में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा सा एरिया मीन्स के ऑलमोस्ट 4 मीटर एरिया, तो उसमें ही हम कम से कम जो है 2-3 हज़ार का फ्लावर सेल कर देते हैं। तो काफ़ी फ्लावर आता है, तो आप 2-3 मीटर एरिया समझ सकते हो कितना का होता है। तो उसमें काफ़ी फ्लावर्स आते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप सोचो कि वो पूरा हम फ्लावर का बंच जो है 500 का सेल करते हैं। और अगर आप अमेजोन के ऊपर इसका रेट चेक करो, तो इसका नाम जो है आपको अमेजोन पे मिलेगा बनीज टेल ग्रास के नाम पे। तो इसकी 12 ब्रांचेस जो हैं वो 800 की सेल होती हैं। तो वो काफ़ी डिमांड है, और फॉरेन से इंपोर्ट हो रहा है, तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काफ़ी इजीली इसकी डिमांड रहेगी, और कोई कंपटीशन में नहीं है। तो इसलिए बेस्ट है हमारे लिए। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है कि वो सेल कहाँ करें। देखो, हमारे पास तो मार्केट है क्योंकि हम लोकल सेल कर रहे हैं। तो अगर अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हम खुद रेडी होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को हम खुद परचेज करें और आगे सेल करें, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी है, हमारे पास खुद के पास डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और बड़े शहरों में ये काफ़ी डिमांड रहेगी। अगर आप देखते हो तो ज़्यादातर ड्राई फ्लावर्स का ही आजकल टाइम है, तो ड्राई फ्लावर्स में ही लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो स्पेशली अगर आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने अभी हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स पे भी जो है पैसे दे रही है, काफ़ी सब्सिडीज हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँ वो ये है कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरे को पंजाब के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर और इवन उस टाइम उत्तराखंड के जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर से उनसे मीटिंग हुई। तो वहाँ क्या बात हुई कि काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स थे, गवर्नमेंट जो बनाती है स्टेट,
सेंटर को देती है, तो काफ़ी रिजेक्ट हुए, उन्होंने वापस भेजे और उसमें बोला कि इसको मॉडिफाई करें और कम से कम 2% फ्लोरिकल्चर का ऐड करें, और उसमें स्पेशली 2% में भी ड्राई फ्लावर्स फ्लोरल क्राफ्ट्स वो ऐड करें। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद चाहती है कि इस इंडस्ट्री को हम आगे लेके जाएं। तो फिर एक बात और कर लूं कि स्टार्टअप्स हैं तो उसमें हम इसको लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनमें, तो आप डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को यूज़ कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हम एग्रीकल्चर में काम तो कर रहे हैं, तो उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए जैसे मैंने बात की, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी ऐसे वीड हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन पैडी है, पैडी में काफ़ी तरह के ऐसे हम वीड्स हैं, उनको सेलेक्ट किया, उनको ड्राई किया और मार्केट में लेके गए। तो कई बार तो मैं खुद हैरान होता था कि इसको तो हमने वीड को कलेक्ट किया है, और जो मेरे साथ वाले थे वो मजाक में ही बोल देते थे कि इसकी जो कॉस्ट है वो 400 है, और लोग 400 में ही वो पैकेट्स ले जाते थे। तो मैं ये बोलता हूँ कि इसकी ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। पंजाब में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ काफ़ी डिमांड है आसपास, जो इसलिए हमने जो है काफ़ी विलेजेस अडॉप्ट भी किए हैं। बट अगर मैं बात करूँ साउथ की, तो साउथ में तो ये सारा कुछ पहले ही है, साउथ से ही तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो पंजाब में ये न्यू था, साउथ में तो बहुत देर से ये चल रहा है, इवन लेडीज ये काम कर रही हैं। तो मेरे लिए मोटिवेशनल एक विजिट था जो मैंने किया हैदराबाद में। तो हैदराबाद में उन्नत भारत अभियान के अंडर एक ट्रेनिंग चलती है, तो उसमें मैं गया। तो मेरे लिए एक नई चीज़ क्या थी, जो मैंने जहाँ से ये सारा आइडिया आया, तो वो क्या कर रहे थे कि जो पेपर वेस्ट है, इवन जो टेक्सटाइल वेस्ट है, कपड़ा है, उसको यूटिलाइज कर रहे थे। तो वो उसकी एक स्लरी बनाते हैं पानी में घोल के, तो फिर वो मशीन पे जाती है, उसका एक पेपर बनता है। तो वो पेपर को लेडीज को बांट देते हैं, तो उससे फिर जो आपके फाइल कवर्स हैं वो बनते हैं, मिठाई के डब्बे बनते हैं। तो ऐसे वो लेडीज उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ड्राई फ्लावर एक मेरा इंटरेस्ट भी था, यूनिवर्सिटी में मैंने काम भी किया था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको पंजाब में एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने पहले थोड़ा सा काम किया, फिर डीएसटी को हमने ये प्रोजेक्ट डाला। तो फिर डीएसटी से हमें ये प्रोजेक्ट मिला और काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट रहा, तो काफ़ी पेटेंट्स इवन हमारे निकले, और बहुत अच्छी टी डेवलप की हमने इसमें। इवन अगरबत्तियों पे काम हुआ, इवन डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हमने काम किया। तो मार्केट की मेरे को नहीं लगता कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई है, टिल डेट तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो जो फार्मर्स अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो उन्होंने भी उसको एक एडिशनल इनकम के लिए एक्सेप्ट किया। एनी अदर क्वेश्चन? So there is one, take a look. हाँ देखो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक बात है, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कोई पर्टिकुलर ड्राई फ्लावर्स के बारे में अगर हम देखते हैं, तो ज़्यादा जब काम ही नहीं हो रहा, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी इतने इंश्योर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, और वो भी चाइना से आ रहा है। तो उसकी बात करें तो जो लोगों के तक पहुंच रहा है उसमें कई फ्लावर तो टूटे हुए मिलते हैं उनको। तो अगर आप लोकल ये तैयार कर रहे हो, तो उससे सबसे पहले बेनिफिट क्या है कि जो चाइना में फ्लावर है उससे डिफरेंट फ्लावर आपके पास है, और आप उसको ड्राई कर रहे हो, तो मार्केट में वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो मार्केट में पहले ही नहीं है। जैसे मैंने क्राइसेंथेमम यूज़ किया स्मॉल वाला, तो वो पहले ड्राई फ्लावर्स में मार्केट में नहीं आ रहा चाइना की तरफ से। तो वो उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। इवन जो आप रेजिन प्रोडक्ट्स बनाते हो उसमें काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। तो जब वो हम मार्केट में लेके गए, उसकी डिमांड ऐसी थी कि हमारे पास कोई फ्लावर ही नहीं बच रहा था। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जहां तक बात है, वो ये है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें ही बनाने पड़ेंगे। ज्यादातर मार्केट में कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ड्राई फ्लावर के बारे में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं पूरा हो रहा। तो स्टैंडर्ड्स तो तब बने ना जब आपके पास प्रोडक्ट पूरा हो और इस पे ज्यादा काम हो रहा हो। जी मैम। Yes, thank you so much, sir, again for your talk, and I apologize for the earlier. इट्स ओके And मैम। I can
Yes, sir. And I can see how interested people are, even they are asking so many questions about this. Thank you so much, ma'am. Yes, sir. Thank you so much. And let's begin. Let's initiate this. And the final invited talk of the day one will be delivered by Dr. S. Ravichandran, professor at St. Peter's Institute of Higher Education and Research, Chennai. He will be speaking on the highly relevant and forwarding topic, that is the sustainable agriculture through green chemistry. Dr. Ravichandran is a distinguished academician and accomplished researcher widely recognized for his work in green chemistry, environmental sustainability, and innovative chemical approaches that supports eco-friendly agriculture solutions. His contributions have significantly advanced our understanding of how green chemical technologies can reduce environmental impact and enhance the crop and soil health, promoting long-term agriculture sustainability. With extensive research experience, numerous publications, and a strong commitment to the sustainable development, Dr. Ravichandran continues to inspire both scientific community and the young researchers across the country. We are honored to have him with us today. Sir, we warmly welcome you and respectfully invite you to deliver your address. Thank you, Tamanna, for your nice introduction. Can you see my present PPT? Sir, it's not visible actually. Not visible. I'll be sharing with No, you. sir. Please kindly share it. Yeah, I'll be sharing with you. Okay. Yeah, you please check it. It is there. Please kindly upload it. Okay, sir. Sir, give me a second. I will share it with you. Sure, Okay. sure. Because in my system, it is coming stop sharing like that. Is it okay, Tamanna? Yes, sir. So it will take a second. I will share it. Yeah.
Sir, can you please check it out whether it's visible? But it's not, I could not able to see this. Okay, you are not able to Now see only it. loading. Yeah, loading. It Okay, is okay. loading. Yeah. So whenever you want to like change it, please let me know Yeah, once. sure, Tamanna. Okay, wait. It's not visible to me. Yeah, now it's visible. Yes, it's coming now. Am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. Audible. Okay, You can. thank you. Yes, sir. I'll proceed. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and that knowledge makes. Very good evening to all of you. It gives me immense pleasure to be the part of International Conference on Agriculture, Veterinary, Transformative Approach, Research and Innovation Forum. At the outset, I thank Tamanna for having given me this wonderful opportunity. And I appreciate the organizing team for coming up with the appropriate theme for this international conference. I feel this conference is another milestone, another stepping stone in the successive path of constructive activities of the Goa College of Agriculture. And I am sure that this conference will bring a fruitful result in future. And these 3 days, November 16 to 18, are considered to be a green letters day in the history of Goa College of Agriculture, Goa, for this conducting and holding this conference, international conference for the peoples. And it is, I am Dr. Ravichandra, from professor in chemistry from St. Peter Institute of Higher Education and Research. Next slide, please. Next one. Yeah. Yes. Keep it that one. Yeah. So I'm very happy to be the part of this international conference. Next slide, please. Yes. As you are all aware that science and technology has brought about medical revolution in the middle of 20th century, in which drugs and antibiotic might have been discovered. This advancement in the medical technology has resulted in increasing the human life expectancy from 47 to 74 years. And the world food production also increased enormously, as it is referred by Green Revolution. And this enormous quantity of the food production that happens mainly because of the implementation of the new high-tech equipment in the agriculture field, usage of the fertilizer, pesticide, insecticide that has enhances and better quality of the seeds and the new hybrid varieties. They have increased the quality of the food production. But at the same time, if you look at the like a coin, if you look at the one side of the coin, we are seeing the benefit of the science and technology. But if you look at the other side, the harmful effect of the science and technology also have to be pronounced. The main among them being the pollution of water, air, and soil. These are all the three essential constituents for all the human sustenance of the living beings that has been polluted due to the science and technology. And the science and technology must raise the increasing aspiration of the people. Actually, science and technology must address the rural and urban people and solve their problem. So the better impact of the science and technology will result only when they reach to the human society. On 3rd January 2019, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has visited Lovely Professional University, and he has given another slogan called Jai Anusantan. For the existing slogan called Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, he has now given Jai Anusantan. The meaning is all the scientific progress that happen in the academic or industry must be able to solve the problem of the common man. So that is the main thing that we have to focus. I believe that this conference forum will bring such kind of the fruitful result in future. And as you are all aware that agriculture is the backbone of the human human history, civilization. It feeds us, sustain our economy,
and employs millions of the people. However, today our agricultural system that faces immense pressure from population growth, climate change, water pollution, and over exploitation of the resource depletion. It is a great honor to be the part of this international conference forum on agriculture and veterinary, and the sciences will address us and focus on transformative research and innovation are the three pillars that shape the future of the sustainable food for health and system sustainability. Agriculture and veterinary sciences are not merely about production. They are about the protection, preservation, and progress. Sustainable agriculture offers a possible solution. It respects both nature and people. Green chemistry offers environmentally friendly solution, and that will be reducing the chemical footprint in the fertilizer, pesticide, and pharmaceuticals. Green chemistry that actually introduced in the year 1991 by Professor Paul T. Anastas by the USA chemical scientists. And accordingly, the green chemistry protect the environment, not by protecting the environment against from the pollution. And this green chemistry, there are 12 basic principles. As you are all aware that climate is one of the major topic discussed in most of the leading research laboratories in the world. And climate change, one of the challenges, tasks that we are facing today in our life. And in the last few decades, according to NASA report, the global climate temperature has changed. Average temperature has increased from 0.8 degree to 1.4 degree Celsius. And this might be appear as a small variation in the temperature, but this will bring about a drastic change in our agriculture. So already we have witnessed many kind of the climate changes like melting of the ice glaciers and increasing the sea level about 25 centimeter. It will be predicted that by 2030 it will be going to rise the sea level about 30 centimeter, and that will be leading to loss of biodiversity, and it is going to impact our environment, and human health also will be affected. So this kind of forum will be very useful to discuss and find amicable solution to solve this problem. Next slide, please. Next slide. Yeah. So there is an urgent need for sustainable agriculture to protect the environment and to protect the clay and the planet. Next slide, please. So according to this green chemistry, this principle, there are 12 basic principles will be there. So let us discuss briefly about one by one so that that will be very much useful for protecting the planet, and that will lead to sustainable agriculture. Next slide, please. And the first, there are 12 basic principles. The first principle is, next slide, please. Prevention of the waste product. That is the, it is better to prevent the waste product before rather than to clean or treat after it is being formed. So whenever chemist, first, next slide, please. Whenever chemist synthesize any product, they must keep in mind, they ensure that the formation of the waste product must be avoided. As you are all aware that there is an old saying that prevention is better than cure. So we have to prevent the waste, and we ensure that all the chemical process, we must ensure this formation of the waste product must be minimum. Next slide, please. As I have already visited our Taj Mahal, and we have seen that there is a darkening effect. Next slide, please. Darkening effect of the Taj Mahal. We have seen that because the walls of the Taj Mahal, it is a darkened. That is mainly due to the waste product that has been thrown by lot of these Madura oil refineries. They are throwing lot of quantity of the oxides of sulfur and nitrogen that will be mixing in the rainwater during the rainy season. That will be converted to sulfur, this calcium sulfate, because our marble that is made up of calcium carbonate, these will tend to react with the sulfuric acid. It forms calcium sulfate. That is the scale formation mainly responsible for the darkening effect of the Taj Mahal. So we have to protect this monument of the, because one of the seven wonders of the world, because now it is happening due to the darkening effect because of the formation of the waste product. Next slide, please. Yeah, this is the, you can see that. So there's darkening effect due to the formation of the waste, that is due to mainly because of the Madura oil refineries. They throw large quantity of the sulfur oxide and nitrogen oxide. Because of the acid rain formation, it is darkened effect. Next one, please. The second principle that focusing and the goal of the
to reduce the prevention of the less hazardous waste. Nowadays, because in conventional, traditionally, chemist has used chemical synthesis, whatever means that is possible. But nowadays, due to the development of green chemistry, nowadays we will be focusing on the highly toxic chemical that has been replaced with the less toxic chemical. For example, in the synthesis of the polystyrene foam sheet making material, that CFC, chlorofluorocarbon, have been, because that is mainly contribute the depletion of the ozone layer and climate change and global warming, that has been now replaced with carbon dioxide, which is less toxic. So this kind of innovation that is happening as a result of the development of green chemistry. Next principle is the raw material for the we have to use for the product. Whenever using the chemical synthesis, we have to use the starting material should be renewable resource. For example, you see this polylactic acid. It is one of the very important for the polymer product synthesis that has been synthesized from the corn as a raw material. It is a renewable one. So yeah, conventionally they use benzene as a raw material for synthesis of polylactic acid, that is more prone for the toxic and carcinogenic, that has been replaced with the now this renewable resource. So we have to use the renewable starting material to protect the environment. Next one. The fourth important principle is maximum incorporation of the reactant into final product. Because as you are all aware that whenever we are designing any synthesis, we must ensure that all the elements in the starting material that has been participate in the product formation. If any element is not at all utilized in the product formation, that leads to the waste formation. So, for example, you see in this slide, because this oxidation that resulting, the atom economy will be improved. So we will see that whenever you are utilizing the elements in the starting material, that has to be participated in the product formation. Otherwise, that will be lead to waste formation, that is spoiling and damaging the environment. Next slide, please. So the fifth principle is energy requirement for the synthesis should be minimal. Because energy, as you are aware that energy is the capacity to do work. As you are all aware that industrial, we have the many different processes like heating, run, cooling, transportation, refining, and all these processes that require energy. And most of the energy, 90 to 95% of the energy that we are obtaining from the petroleum-based product. And this burning of the fossil fuel, that is mainly responsible for the global warming because of the carbon dioxide evolution. So we must able to this principle shift our tendency mind towards the renewable energy resources, because the burning of the fossil fuel, that is mainly responsible for the global warming and other climate change, all the problem that we are discussing. So that has to be find amicable solution by turning our mindset toward the renewable energy resource like solar energy, wind energy, tidal energy. They are available in plenty, but according to our Honorable Prime Minister Narendra Modi, we are harnessing very less percentage, like 10 to 12% so far we are harnessing. So this this percentage must be increased in future, at least by 2050. So that is the principle, that is statement. Next one, please. The next principle is selecting the most appropriate solvent. As you are all aware that we use solvent in our daily use. For example, cleaning purpose, nail polish, and cosmetic product. And most of the solvent that has been utilized for the chemical synthesis also. Like traditionally, chemist has been used solvent like benzene, chloroform, dichloromethane, that has been the organic solvent, and that creating problem because most of them, they are toxic and carcinogenic in nature. So as a result of the development of the green chemistry approaches, we are redefining the role of the solvent. Whatever solvent we are using in the chemical laboratory for the synthesis, that must be eco-friendly. It should not toxic, it should not pollute or damage the environment. So we have to, when and eco-friendly solvent like water we can use as a solvent, or like alcohol, like that we have to use the less polluting solvent to protect the environment. Next principle, please. Next slide. So the next principle that is focused on selecting the most appropriate starting material. For example, you see here the malic anhydride, one of the very important product that has been synthesized conventionally from the benzene. As you are all aware that benzene is a highly toxic and carcinogenic. It will be leading to cancer.
So this kind of chemical, this benzene should be avoided. So you have to select the appropriate starting material. And very recently, scientists from this Singapore bioengineering biotechnology, next slide please, they have synthesized this malic anhydride from this furfural by using the vanadium phosphorus oxide as a catalyst. Next slide please. So it is a wonderful innovation as a result of the green chemistry. So the Singapore, they have synthesized this vanadium phosphorus pentoxide, use this furfural, and they got this malic anhydride. So this kind of innovation must be happen to protect the environmental concern. Next slide, please. The next important principle, that is designing of the safer chemical. And most of the time we are using the drug, and this drug normally whatever available in the clinic, that is in the racemic in nature. And that means one of the enantiomer having the curing effect, whereas the another enantiomer that is more defecting. For example, in the 1961, the drug was introduced, thalidomide. It has been used for the pregnant woman during the pregnancy, relieve the pain from the pregnant woman. But this one of the enantiomer or enantiomer that is having the curing effect, whereas the other enantiomer that is being present in this thalidomide, that leads to birth defect. So whenever we are designing any drugs, that must be safe to use, which will not create any side effect for the people. So this is very important principle. Next one. The next principle is the manufacturing plants should be free from accident. So whenever we are using the chemicals in the industry, this principle actually focusing on the safety for the people as well as the industry where it is located. So whenever you are using the chemicals, that should be not highly reactive. If at all we are using the highly reactive chemical, that leads to explosion, or that will be leading to fire. Because many example in history we see that there are several examples where we are using the highly reactive chemical that leads to disaster. And even people today, they don't forget the 3rd December 1984. It was a black day in the history of India, because on that day the Bhopal tragedy disaster that happened, more than 50,000 people killed between the age group of 9 to 15, because most of the children, because their immunity power is less, because of the MIC, the problem caused due to this methyl isocyanate that has been used for the carbaryl pesticide synthesis by the American based company in the Bhopal. So, and more than 2 lakh people, they have been hospitalized for various reasons. So this kind of highly reactive chemicals should be avoided as far as possible, because otherwise that will lead to disaster and accident. Next slide, please. That is the 10th principle, that is the use of the catalyst should be prepared whenever and wherever is possible. Because as you are all aware that generally catalysts that facilitate the transformation, chemical transformation, without being incorporated in the final product. And the benefit of the catalyst that has been utilized very small quantity, and it can be also recovered also. And this catalyst will accelerate the reaction manyfold, and the yield also very, very high. And many reaction nowadays, as a result of the green chemistry principle, there are many kind of the this green chemistry principle, this will be coming up many papers using the catalyst. So use of catalyst that must be encouraged, that must be prepared whenever and wherever is possible. Next slide, please. The 11th principle that states that avoid usage of the protecting group, because most of the time this protecting group that does not take part into the final product formation. So, and mostly when you are using the protecting group, that will increase the number of steps that require, demand more chemicals and reagents, and that create more wastage product formation. So we must able to avoid this protect group. Unless it is necessary, we should not use the protecting group, because usage of the protecting group, that will be increasing the waste generation in the earth. So that has to be avoided. Next slide, please. So the 12th principle that involves strengthening of the analytical techniques. So nowadays the scientists, they'll be going for the chemical synthesis, that will be going for minimum number of steps, and that will be less generation of the waste, and there will be more this more atom economy, and more utilization of the starting material, and renewable usage of the
renewable usage of the starting material, and should not create any toxic chemicals, should avoid any reactive chemical. These are all the very challenges that we are utilizing nowadays in the recent analytical technique. So by embracing the green chemistry principle, we can cultivate crops that nourish humanity without damaging the planet. By combining manufacture approaches, the transportive approaches with innovative research, we can ensure food security, environmental harmony, and a healthcare that would be better future generation. So I believe that this conference will definitely will address all these kind of the problem and will be come up with a very good, brightful future for this humanity. And finally, I thank you all for having given me this wonderful opportunity and for your silence and observing this observation. Yes. Thank you, sir. If any queries, I can able to answer. Okay, thank you so much, sir. It was a great lecture. So there are some questions like being shared to us on the WhatsApp. So first one is, how does green chemistry contribute to sustainable pest and diseases management? Yeah, definitely, because mostly is this agriculture. Mostly our farmers, they are using this carbamate, phosphate, all these chemical based fertilizer. That will be because mostly 30% of the fertilizer pesticide that is being utilized and absorbed by the root of the plant. Remaining that will be washed away to the that is surface runoff, that is goes to the water bodies, and that will be the algae present in the water body that is creating, that is eutrophication, because more growth of algae growth that happen, because the algae life is very less, 1 to 3 days, so they die and pollute the quality of the water. The physical, chemical, biological property of the water is affected mainly because of the chemical fertilizers. So nowadays, due to the development of green chemistry, we are going for usage of the biofertilizer, which will not pollute the fertile nature of the soil. So that is the benefit of green chemistry. And sir, there's another one. Can Yes. green chemistry contribute to reducing greenhouse gases emission in agriculture? Definitely, because of the, I told you, the renewable, one of the principle is the less energy generation, because mostly we are using 90 to 95% of the energy nowadays at present we are using that petroleum based product. That is mainly responsible because the burning of the fossil, that is more responsible for the global warming, climate change, acid rain, and many environmental issues. So when you shift our tendency toward the renewable energy resources like solar energy, wind energy, tidal energy, we could be able to protect the environment and save the human society. So that is the wonderful nature of this green chemistry. Yes. Yes, sir. And there's one more question, which is, Yeah. how can interdisciplinary research accelerate the adoption of green chemistry in agriculture? Yes. Green chemistry actually, it is interdisciplinary, not only for chemistry alone, it is for the botany, biology, pharmaceutical, medicine, and biotechnology, biochemistry, etc. But that is why it is called a multidisciplinary, and also it is an interdisciplinary course. It is not confined to one particular discipline. Green chemistry, because it is a green business also we are talking about. So because not polluting the environment, whoever want to do some meaningful contribution towards the environment, and they must be able to adapt the principle of this green chemistry. It is like a Bible. We have 12 statement here. So this 12 principle, if we embracing this green chemistry principle, we can protect the environment and protect the human life also. Thank you so much, sir. That was a really great lecture. And thank you so much for truly enlightening and thought-provoking session. Your insight into the sustainable agriculture through the green chemistry have offered us a fresh and much needed perspective on how environmentally responsible chemical approaches can transform modern farming. Your explanations on reducing the chemical footprintings and all the 12 principles that you have taught us, like, it was really amazing, and we sincerely appreciate the clarity with which you connect scientific principle to the practical agriculture application, and your contribution has undoubtedly enriched today's discussion and encouraged us to think more about the sustainable practices. And thank you so much, sir, again Thank for you. Thank joining you. us.
Thank you Yes, very much sir. for this wonderful opportunity. Once again, thank you. Thank Okay. you, sir. So I will be now letting you know the awards which is being will be announced. Your awards will be announced now. The Dr. B.B. Munkar Award, which is going to Dr. Sharad Shroff, and Dr. B.B. Munkar Plant Pathology, which is Dr. Prashant Lakshmi Rao. Dr. T.S. Venkataraman Award, Dr. Shubhashri K.S. Emerging Horticulture Award, Ambika Bhandari. Eminent Scientist Award, Dr. Sharabjit Singh. Excellence in Teaching Award, Dr. Pushpa P. Young Extension Educationist, Dr. S. Kavita Bhagya. Dr. Young Scientist Award, Dr. Amit Vishwas. Then we have Young Women Extension Science, Dr. Veena MP. Distinguished Scientist Award, Dr. Pramod Kumar Sahu. Best Scientist of the Year Award, Dr. Archan Keshava. And we have the Best MSc Thesis Award, V. Preeti Kumari. Best Food Scientist Award, Arjit Ray. And then we have the Best Extension Scientist Award, Dr. Suryakant Baburao. Best Field Vegetarian Award, Dr. Prateek G. Kotke. Best Floriculturist, Miss Said Aisha. Best Floriculture Award, Dr. Ningombam Shushma Devi. And Best Food Scientist Award, Mrs. S. Chandra Prabha. Then we have Best Food Technologist, Miss Anjali Soni. Best Institute Director, Dr. R. Krishnamurthy. Best KVK Institute of the Year, that is Dr. Yogesh D. Pawar. Best KVK Scientist, Dr. V. Suresh. Best MTech Agri Engineering Thesis, Dr. Kavya T. Best MSc Thesis Award, Sunil. Dr. Then we have Best MVSc Thesis, Dr. Hadiben N. Patel. Dr. B.B. Mundekar Award, that is S. Karpagavalli. And then we have B.P. Pal Award, Dr. Tapas Ranjan Das. The next we have H.P. Singh Award, Dr. Sridharan. Dr. M.S. Swami Nathan Award goes to Dr. Mala Gaura D. Patil. Dr. Norman E. Borlaug Award, Dr. Deepak Patel. Dr. Punjab Rao Deshmukh goes to Dr. Vishali Haribau Survey. Then we have Ratan Lal Soil Scientist Award, Dr. Kailash Ramesh Rao. Then we have T.S. Venkataraman Award, Dr. Shankar Gaura Patil. BP Pal Award, Dr. S. Maheshwarama. Emerging Scientist, Dr. Pawan Tejasvi T. Young Women Scientist Award, Dr. Namo Dubey. Then we have the Gold Medal Award, Ms. Reema Ravindran Naik.
So I would like to thank all the awardees, and with this, let's close the inaugural day. And now I would like to thank all the guests which have joined us today for the day 1 of 12th International Conference of ICAVRI 2025. I sincerely hope that today's proceeding have provided all of us with valuable insights, new perspective, and renewed inspiration towards building a resilient, sustainable agriculture future. With this, we officially conclude the inaugural day of ICAVR 2025. And I would like to thank Honorable Chief Guest, all distinguished Vice Chancellors, Guest of Honor, keynote speakers, organizers, volunteers, and every participant from your gracious present and active contribution in day 1, truly a memorable and enriching successfully. Thank you once again for this wonderful session. We look forward to our continuous enthusiasm and participation in the exciting scientific session lined up over the next 2 days. Jai Hind, Jai Kisan. Have a wonderful evening.